हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग, असतो सदा मी आता ड्रीमिंग. हो असतो उगाच स्माइलिंग, बघता तुला मन जम्पिंग, वाटे हवे हे गोड फिलिंग. दरररर असतो उगाच स्माइलिंग, बघता तुला मन जम्पिंग, वाटे हवे हे गोड फिलिंग. नमस्कार, मी अविनाश. नमस्कार, मी विश्वजीत आणि तुम्ही आम्हाला बघत आहात मिर्ची प्लस वर. हाय एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला फ्रॉम मिर्ची प्लस. और आज मेरे साथ हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर डुओ जिनके गाने एक्चुअली लोगों के बहुत ज़्यादा फेमस है एंड दे एक्चुअली टच द सोल. आई हैव अविनाश एंड विश्वजीत विद मी. आई होप आई हैव प्रोनाउंस इट राइट. Yes. Okay. So welcome, sir, to Mirchi Plus. Yes. So you are coming up with a project. It's a Hollywood project with Murder Mystery 2. For Murder Mystery 2, and you have composed a song for them, right? Would you elaborate on like how did you get this movie? Or, like how did they approach, or like could you please elaborate on that? Sure. Actually, मैं और विश्वजीत, we are working with each other for last say more than 15-20 years, and it so happened that in the lockdown period we had an inquiry about a small French film. Okay, so we were composing music for that. और उसका जो म्यूज़िक था उसमें इंडियन जो कल्चर्स है, मतलब साउथ इंडियन, पंजाबी, ऐसे सब कल्चर्स का मिक्सचर बनाकर वो एक म्यूज़िकल पीस उनको चाहिए था. सो व्हाट वी डिड कि हम लोगों ने कंपोज किया, उनको भेज दिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा. और देन दैट प्रोजेक्ट वाज ऑन. व्हाइल दैट प्रोजेक्ट वाज ऑन, द कोरियोग्राफर्स ऑफ MM2 somehow happened to get connected with this musical piece, and they liked it, and then they got our email address, and that's how the entire thing started. Then they asked us about a film, that we are doing a film. Is it are you guys okay to compose a track for us? And we said okay. It's like just what we usually do. Yeah. And then when we came to know about this is not a regular film, this is a huge It's project. a huge film, yeah. And it's a Hollywood film, and the great Adam Sandler and Jennifer is there. Aniston. So Jennifer Aniston is there. So we were like zapped, and that was like a more than a dream come true for us. Yeah, actually. So, like, I would want to know from you, how did you go about recording this song? As in, like, उन्होंने आपको brief दिया था, because it's a Hollywood project, right? And to be honest, एक इंडियन कल्चर, हम एक गाने के थ्रू एक पूरा इंडियन कल्चर हम दिखा रहे हैं, विच ऑल्सो ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के देर इज़ नो नेगेटिव कोनोशन. आई वोंट से नेगेटिव, बट सब कुछ सही हो जाए, एक वो चीज़ आती है ना. हाउ डिड यू स्टार्ट, लाइक आपका स्टार्टिंग प्रोसीजर, लाइक एक होता है ना, आपको प्रोजेक्ट मिल गया, अभी आप काम करने बैठते हैं. सो हाउ डिड यू गो अबाउट ऑन दैट? या एक्चुअली हुआ ये था कि फ्रेंच जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पहले तो ये पूछा था कि हमारे पास एक असाइनमेंट है, और उनके पास वो कैसा आया ये भी थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ. बिकॉज मर्डर मिस्ट्री was shot in Paris also, some part of it. तो ये जो गाने का सीक्वेंस है, बॉलीवुड सीक्वेंस, दे कॉल इट एज अ बॉलीवुड सीक्वेंस, बिकॉज दैट कैरेक्टर ऑफ महाराजा इज गेटिंग मैरिड एंड टू अ फ्रेंच ब्राइड, एंड वो सिचुएशन में ये गाना होने वाला था, प्लेस किया था. एंड इन दैट सिचुएशन दे ब्रीफ्ड अस अबाउट व्हाट इज द कैरेक्टर एंड हाउ पंजाबी संगीत इज, माहौल जो होता है संगीत का, वो कैसे होता है. उन्होंने कुछ रेफरेंस भी दिए थे हमें, जो बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर गाने हैं पंजाबी, like all the popular Punjabi numbers, बहुत सारे हैं, मतलब टू स्टेट्स, फिर क्वीन का, ये बहुत सारे गाने थे. तो वो उन्होंने हमें पूछा था कि कैन यू ब्रिंग समथिंग न्यू देन दिस. तो we said we will try because we will give our best shot, and we tried, and फिर उसके बाद चालू हुआ ये काम. तो इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ. जो भी अपने संगीत का जो माहौल होता है वो तो ऐसे ही होता है, तो गाने में भी वो सब चीज़ें हैं जो
सेलिब्रेशन का माहौल बनाती है. yeah. But importantly, मुझे ये बात mention करनी है कि this song is not just about a Sangeet song. Okay. This has got some story involved in this song as Okay. well. So that was the most challenging part for us to crack that particular section where the Sangeet is going on, but there is this Maharaja guy coming in, Yeah. which has got some darker shade. Yeah. And he comes like a rocking over there, Mm. and then some story which is not to be revealed right now. Yeah. It goes in the film. So I think the most challenging part creating this song was to incorporate the story what goes in the film. फिल्म भी चल रही थी पीछे गाने के साथ साथ हाँ, मतलब the graphic भी story चल is रही also थी. story is Story, also right. you know, the story is also moving on. It's Yeah, not yeah. just It's that not people just are the song. dancing. Yeah. So I think that was the most challenging. This is the most turning point in the film. Yeah. This song is What- most turning point. What goes in the song? Because is a- if you have watched trailer, you might have seen Yeah. Adam and Jennifer are getting invited from Maharaja. You should come to my marriage and all that. Like lehenga and Indian attire and Indian wedding attire. attire is there, and they are coming to a wedding, and then film turns into a different. Is it not great to watch them in our costumes, right? It's amazing. In fact, I was reading social media, but it went really viral. Yeah. It was amazing. It was amazing. Indian culture just booming everywhere. Absolutely, it's a And, pride to have that. Our fashion icon Don Manish Malhotra. Yeah, he has. Yeah, exactly. He has designed the lehenga for Jennifer, right? I also want to know कि and I'm sure viewers would also like to know, आप लोगों ने बहुत सारे languages में काम किए हैं, right? The main question arises how do you grab the soul, because ठीक like firstly in Hollywood you have done a project जहाँ पर storytelling is very different, you know, and then India. अब इंडिया में ही इंडिया को world within a world बोला जाता है, इंडिया में ही इतने सारे languages हैं. आपको मतलब how do you grab the soul वहाँ का क्या, because your songs are actually good, वो देख के पता नहीं चलता कि you know who has composed it and from where they come, because they are very true to that culture. How do you go about it? बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारे इंडियन म्यूजिशियन फ्रैटर्निटी जो है पूरा, वी इंडियन म्यूजिशियंस आर वेरी मच केपेबल ऑफ अडेप्टिंग एनी स्टाइल, एनी साउंड, एनी कल्चर, एनी जॉनर in our music and blend it with our melodies and all. Yeah. So global music में जो भी ट्रेंडिंग होता है, ग्लोबल म्यूजिक में जो भी अप मार्केट में रहता है, वो यहाँ के सब म्यूजिशियंस ब्लेंड करते रहते हैं. तो हमारा भी कुछ जर्नी ऐसा ही है. तो मतलब हमारा जो मराठी या जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस में हमने काम किया है, तो इसी स्टाइल में हम जाते हैं. तो एक तरीके का एक गोइंग विद द ट्रेंड वाला एटीट्यूड रहता है, और वो सबसे मतलब हेल्प करता है कि टू क्रैक द थिंग्स. And I also feel that there is one thing that ऐसे कहते हैं कि music has no language. Right. But the thing is, in film industry especially, the songs are always created around characters. So it's very important for you to understand how the character speaks, how he talks, you know. So many of the times what the characters inspire us to make the song in that way. So that's how we create the songs depending on how the character. In Marathi we have done so many romantic films, and our Marathi audience must be knowing that we started with Pune Mumbai, where it was love at first sight kind of a thing. Then the another film was Premachi Goshta, where it was matured love, and both the songs are totally different from each other. The reason being, we get into the character and start imagining how that person will behave. So language is not a barrier in that case. And one more point, that we whenever we compose, we strongly believe that there should be a strong melody to that song. And if that connects with the hearts of the listener, then it's going to work. If we don't work only sound, we don't work only sound palette, we work more on the melody side. And that thing is prominent for us, and that works for us. So here also it happened like after like this was the first draft we sent to them, and immediately they responded that we have liked the melody.
Wow. We don't know the lyrics, we don't know nothing, because as he said, like, music has no language. Yeah. But they got it, what the feeling of that song. तो उन्होंने first they draft got ही it. approve कर दिया था? First Wow. draft में ही मतलब जो the basic मुखड़ा जो Basic. मुखड़ा Yeah, yeah, that got it. hook line जो है वो Yeah. hook that line they तो, really like in the first attempt only. फर्स्ट ड्राफ्ट में ही अप्रूव हो गई थी। Yeah. तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेलोडी स्ट्रांग होनी चाहिए। Yeah, because अब गाने से भी एक कहानी ही कह रहे हैं, like you said, इमेजिन करना है पूरा कैरेक्टर्स एंड कैसे वो बिहेव करेगा, कैसे गाएगा, Absolutely, सो वी आर टेलिंग अ स्टोरी ओनली, कहानी ही कह रहे हैं गाने के थ्रू। Absolutely. वाओ, दैट्स रियली नाइस। अभी हमने आपने मुंबई की बात की थी, उसके बहुत रीमेक्स भी बने हैं, अदर उसके आई थिंक पंजाबी में भी रीमेक्स बनाए, पर रीमेक बनाए। माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, what do you think about the remake culture which is happening, you know, especially कई बहुत बार हमको पता भी नहीं होता कि गाना ऑलरेडी बहुत पहले बन चुका है, यू नो, जो हम अभी करंट लिसनर्स हैं, हम लोग एक गाना बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, देन वी रियलाइज ओ ये तो पहले ही आ चुका है। सो लाइक आर यू गाइज ओके विद द रीमेक्स, एंड आपका क्या, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? I think it's a mixed kind of emotions what we carry about that, because I think a film which has been hit in a certain regional area, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सब कल्चर्स में वर्क हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ गुड अबाउट इट कि यू ऑलरेडी हैव सीन दैट फिल्म एंड यू हैव ऑलरेडी इमेजिन्ड कि वो फिल्म कैसी है, देन यू नो यू कैन जस्ट, the real task is to convert it from that language, that culture to the next culture, and I think sometimes it really works, but you know, copying something always doesn't work is what I feel. Yeah, you have to go for your creative thought, that In should be terms of done. songs also. Yeah, in terms of everything, because you know what we have created in Marathi might not be the taste of the Punjabi audience. Yeah, yeah. Right. So we have created that particular music for that particular characters who were acting in the film. Now the characters in some different languages might be different. They might have different body language. Yeah. So you should create different songs for them, is what we feel. Actually, I feel quite different in a different angle about हाँ. this. See, क्या होता है कि दुनिया में कहीं पे भी जाओ, कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, धर्म अलग है, जात अलग है, सबका एक लाइफस्टाइल अलग होता है, लेकिन बेसिक्स जो है ह्यूमन का वो सेम रहता है। लव हर एक सोसाइटी में है, Yeah. एंगर हर एक सोसाइटी में, सो सेट ऑफ इमोशंस दैट क्रिएट स्टोरीज आर द सेम Yeah. इन बेसिक्स। सो ये हो जाता है कि ये यहाँ पे वर्क हुआ है, तो क्यों ना हम यहाँ पे ट्राई करें। Yeah. इस एंगल से वो रीमेक दूसरे Yeah. लैंग्वेज में या दूसरे कल्चर में ट्राई किया जाता है, प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन हाउसेस से, या स्टोरी मेकर से, डायरेक्टर से, एंड समटाइम इट वर्क्स एंड समटाइम इट डजंट, बिकॉज जैसे अविनाश ने कहा कि वो अगर वो मिट्टी की कहानी है, उधर के मिट्टी की है, Correct, correct. तो शायद वो दूसरे मिट्टी से मेल नहीं खाती है, Yeah. तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। Yeah. बट अगर सोल बेसिक जो है वो स्टोरी का, Yeah. आत्मा जो है वो रख के अगर कन्वर्ट होता है, तो अच्छे से वहाँ पे भी वर्क होता है। Okay, so yeah, actually that's a nice take on that, no? Nice. Coming also to, it's actually हम थोड़ा off topic जा रहे हैं, but it's related to music. Reality shows I want to talk to you guys. Like, what are your thoughts on अभी जो reality shows आ रहे हैं आजकल? I'm sure पहले reality shows में हमको बहुत अच्छे singers भी मिले हैं, बहुत अच्छे artists मिले हैं, even I think if I'm not wrong some music composers, the great talents in music. अभी के reality shows पे आप लोगों का क्या take है? Well, this is a very complicated question. Okay, I'll simplify it for you, because कुछ लोग बोलते हैं कि it's just TRP and it's you know like एक बार एक reality show का, I wouldn't name it, but एक grand finale it went for 24 hours. Yeah. And so like I don't know, 'cause so some people say it's TRP, some people say no, it's actually you know actually talent judge हो रहा है, talent hurt हो रहा है। आप लोगों का क्या मानना है इस पर? आई थिंक इसमें रियलिटी ये थोड़ा सा वर्ड निकाल देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। टू बी थोड़ा हार्श हो गया है शायद कमेंट, बट व्हाट आई फील इज देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। इफ यू आर अ बडिंग सिंगर एंड इफ यू वांट टू come in front of the world, as I am an artist and I want to prove myself, then what platform do I have?
Yeah. Okay, so that's a great platform Yeah. for any singer who is coming from any part of India, and it's really that when you perform, and if you are a good artist, then you have been watched by the entire world, Yeah. and you get a good outing out of that. But being if you look at this as a business from the perspective of running the show, there are certain things which Yeah. don't look like very fair Yeah. to all of us, and I don't know I don't know how to what to talk about it. Like there is some system where we can see a singer performing well and another not performing well, but for some reasons the other person goes ahead. But I think what I feel is, as you move on in the industry, such things keep on happening with you. So I think it's a it's a preparation of your future. Yeah. So out and out, I personally feel that reality shows is a great platform for upcoming people. Nice. या अभी सोशल मीडिया की वजह से हर कोई अपने आप से, अगर टैलेंट है, Yeah. एक्सक्लूसिविटी है उसके पास, हुनर ऐसा है कि वो मतलब छा जाता है इंस्टेंटली, तो मेरे ख्याल से वो भी एक जरिया हो गया है कि जहाँ पे लोग अपने से होके, कोई भी पुश ना मिलते हुए भी Yeah. अपने आप में एक स्टार बनने लगते हैं धीरे धीरे. Yeah. ओनली द क्वेश्चन इज लाइक वो मेन स्ट्रीम में आते हैं या नहीं आते हैं, वहाँ कुछ करिश्मा दिखा पाते हैं नहीं पाते हैं, ये वक्त वक्त की बात होती है. लेकिन जहाँ तक रियलिटी शो का सवाल है, तो आज के रियलिटी शो में थोड़ा वो उसका जो पहले जितना उसको वैल्यू होता था उतना नहीं रहा है. Yeah. आज के डेट में Yeah. बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, कि अगर मुझे मैं अच्छा सिंगर हूँ तो मैं कोशिश करूँ और मैं मेरे खुद का फैन बेस बढ़ाऊँ. Yeah. एंड होते मैं कोई तो भी अच्छा ए लाइनर म्यूजिक डायरेक्टर है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और शायद वो मुझे कास्ट करेगा. ये भी एक जरिया वे है. आउट हो गया है Yeah. लोगों के पास. नाइस. आप दोनों अपना प्रोजेक्ट कैसे चूज करते हैं? आपके पास जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, हाउ डू यू डिसाइड कि ये करना है, ये नहीं करना है? लाइक व्हाट्स द डिसाइडिंग फैक्टर? आपको कैसे स्टार्ट होता है वो? Actually, honestly, the industry is more about once you get a hit in certain area, हाँ. then most of the times you are typecasted as a person of that Certain genre. certain ये genre म्यूजिक of में भी music. होता है? होता है. Okay. हमारा फर्स्ट हिट था मुंबई पुणे मुंबई, so naturally after that we It was were romantic film. it was a very romantic film. Yeah. And then we were like typecasted for all the romantic films, so they were considered, and initially of course we enjoyed that, but for how long can कब you तक जाएगा? keep creating similar kind of zone of music? So I think then we always went to the producers and requested them to cast us for different genres of Yeah. films. Yeah. But it so happens that many times you have been chosen by the producers and directors अच्छा, for okay. certain kind of work. और ये बात कहना चाहेंगे हम कि जब धर्मवीर ये फिल्म आई, जो सुपर हिट फिल्म है, Yeah. और हम्बीर राव मोहिते, जो टोटली हटके जॉनर की थी, और उसके गाने सुपर हिट जब हुए, देन अरे आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. देन आई थिंक जो गाने, जो प्रोजेक्ट्स आपको आते हैं, वो मोस्टली आपके प्रीवियस वर्क के ऊपर के बेसिस पर आते हैं आपको. बट आई थिंक people should be open about artists, and they should try them for different genres, because it's not that one success means that you are typecasted into that particular zone of music only. क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी हमें वो चला जाता है, Yeah. राइट? या मेरे ख्याल से स्टोरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेनेवर वी चूज द प्रोजेक्ट. अगर स्टोरी में ही इंटरेस्ट नहीं है, स्टोरी में ही दम नहीं है, या तो मतलब या स्क्रीन प्ले में कभी कभी क्या होता है कि स्टोरी ऐसे देखने में लगती है कि इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, लेकिन स्क्रीन प्ले बात बदल देता है, कैरेक्टराइजेशन बात बदल देता है. स्टोरी का जर्म छोटा सा ही होता है, लेकिन स्क्रीन प्ले उसको डायलॉग और कैसे डेवलप किया है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है. तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती है हमारे लिए कि वो प्रोजेक्ट में हम इन्वॉल्व हो नहीं हो. अगर वो नहीं कनेक्ट होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है.
Right. आपका favorite genre कौन सा है? To work on. I'm sure like as music as musicians आपको like अलग अलग genres में काम करने में मजा आता है because सबका अलग feel होता है, but I'm sure like all of us have एक वो favorite place होता है ना. Is there anything like that with you I think guys? anything cinematic is our genre. Anything Wow. what goes in cinemas. Yeah. It can A be to any Z, genre. Z to infinity, Anything whatever. cinematic is the real answer. Because it keeps on challenging you. If Yeah. you kind of stick to a particular genre, then probably that's not the right thing because you should explore yourself. There are two aspects to this. Few people like their own signature zone वाला हाँ. काम अच्छा लगता है उनको, and they stick to that, and that becomes their trademark, their signature, and they work. They are Yeah. happy in that Yeah. zone only. But for us, it's not like that. We try different rooms of music. Yeah. यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी यहाँ पे कुछ काम करके देखते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पे Yeah. कुछ तो experimenting with the sounds, melody, structure, everything lures. Yeah. Nice. So talking about music, regional content, and I don't know if it is right to say regional or not. It's more about अब Indian content. बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है. The recent is RRR का Oscar win. And now आप दोनों you are working with a Hollywood project. Are there any aspirations of big awards like Oscars or Grammys? And what basically what's your take on Indian music actually overshadow कर रहा है इस वक्त पूरे world को? In fact, your song also. Paris में I was I felt researching. all, Yeah. Paris में it was played and people Yes. really loved it. Yeah, they In were fact, dancing. it even topped the charts or something happened. Yeah. Like it became very big over there. Yeah, true. Yeah. Yeah. So what's your take on that? Actually, honestly speaking, हम लोग खाली काम करना जानते हैं, तो कौन सा अवार्ड कब दिमाग में आए, मतलब हमारे नसीब में आएगा, कौन कब देगा, ये तो पता नहीं होता है. तो ऑनेस्टली ये तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंडियन म्यूजिक और इंडियन म्यूजिशियंस में वो एबिलिटी है कि वो पूरी दुनिया को नचा सकते हैं, पूरी दुनिया को पागल कर सकते हैं. That's for sure. And these days are like this. Like RRR has proved us, Rahman ji has proved us to the world. Yeah. They have done wonders. Yeah. And they are also continuing with that. Yeah. तो मेरे ख्याल से ये बात मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है. Yes, and That's importantly, if we see that Indian cinemas always have songs in them. Yeah. There is no such thing in the rest of the world. So Exactly. you know the culture of getting songs into the film is so familiar to us. Yes. And in most of the cinemas work because of what brings the audience to the cinema theaters is the song. That's the first point. Yeah. So I think that's a very important aspect of India. Indian culture having songs, the Bollywood songs, which are worldwide very popular. Yes. And I think that is the reason, that might be the reason that, maybe now that our songs are appreciated everywhere in the world. Yeah. And like people would like to have that kind of songs in their films as In well. their films as well. So that can be a great thing. Of course, and it's actually like बहुत proud moment होता है. It's a matter of pride, not just the award when I'm saying, but like आपका गाना, you are like actually representing India everywhere. Because of that, Hollywood actors are wearing Indian attire, so basically India is almost everywhere, which is a matter of pride. Amazing that is. Lastly, I would want to know which is the it's you can choose to answer or not. आपने क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में काम किया है, आपको सबसे टफ लैंग्वेज कौन सा लगा क्रैक करने के लिए? I think South languages are very tough to crack. I mean, because they don't resemble to any of our phonetics. So it's very difficult to crack. And many times when we did a film called Vareva, which was a comedy film kind of. And to understand the between the lines, because the jokes are like that, what the couple is talking to each other, and there is something between the line. So it's very difficult to catch up between like what the character have said and what exactly the fun part is. So I think South languages are a little difficult to crack. Yeah. What about you? For you, the same? No, actually, I feel how does it matters? Of course. क्योंकि कैसा है कि अगर
म्यूजिक एज नो लैंग्वेज अगर मैं बोल रहा हूँ तो इट शुड बी रिफ्लेक्ट एनीवेयर. तो Right. अगर मुझे वो भाषा आती नहीं है साउथ की, तो दैट साउथ इंडियन लिरिक्स लिखने वाला जो Yeah. भी है बंदा, हाँ ये डिफिकल्ट सबसे है कि अगर उन्होंने पहले लिखा हुआ गाना हमारे पास दिया एंड Yeah. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, तो वो डिफिकल्ट है क्योंकि हमें उसका ग्रामर पता नहीं, उसका वर्डिंग Yeah. पता नहीं, ये डिफिकल्ट है. बट अदरवाइज रिवर्स वे में अगर आई एम डेवलपिंग अ ट्यून, Yeah. if you are South Indian, you can write South Indian on course. that. If he is Punjabi, he can write on Punjabi. Yeah. So it doesn't matter to me really. Nice, nice. Only thing is that what tune is saying should be reflected in the words. Right, right. Lastly, किंग दी वेडिंग है गाने का नाम है. हाउ डिड यू कम अप, ये सोचा कैसे इस नाम के, लाइक टाइटल के बारे में? आई नो अभी आपने मुझे स्टोरी के बारे में बताया, सो इट मेक्स सेंस. सो इज इट दैट लाइक हु केम अप विद द टाइटल? Yeah, because actually- the song is for Maharaja, right? Yeah, So he's yeah, like yeah. the king. And as we all know, before getting married, every person is a king. so it's like that. So it goes with that as well. Oh, nice, nice, nice. Okay, so in the end, I'll play a quick segment with you guys. आपको सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर करना है उसका. It's very simple questions, right? So we'll start. हम अभी इनके favorites जानने वाले हैं. So, who's your favorite all-time singer, male and female? आप दोनों का. Oh my God, this is a very difficult question. Kishore Kumar and Asha ji. Same. Nice. Who's your current favorite singer, male and female? Any Sukhwinder Paji. Oh, nice. Yeah. And female Shreya ji. Yeah, nice. I think yes, Shreya Ghoshal for Yeah. sure. And yeah, I think I like Arijit Singh. Wow, yeah, nice. Your dream director, ऐसा कोई director है जिसके लिए feel कि मुझे उनका सिनेमा बहुत पसंद है, उनके लिए म्यूजिक बनाना है, और has it already happened? जो ड्रीम मेरे जो ड्रीम है शायद राजू हिरानी. Of course, yeah. Most sensible director what. Yeah. Nice. Your favorite song from 2022? Any language? 2022. Yes, any language. Last year basically जो I think Pushpa song. Which one? That Asharfi. Shrivalli. Really, Yeah. that was really cracking. Yeah. And कोई ऐसा होता है ना all time favorite song है आप दोनों का? ऐसे All मतलब पंजाब कई का। सारे हैं मतलब. हाँ, अच्छा, okay. मतलब इतना अभी ये सवाल आते ही दिमाग में हजारों गाने आते हैं. We love Pancham Da and we follow Pancham Da, R.D. Burman of course. Okay. So I think all his songs are great songs. It's very difficult to choose. Of course. Okay. आपको एक quality उनका बताना है, which you feel very inspiring in music, and आपको एक quality आपका बताना है, which you feel that he's very inspiring in terms of music. Yeah, basically I feel that being an artist, it's most important that you should be disciplined and you should मतलब जो रियाज रहता है, तालीम जो रहती है, प्रैक्टिस जो रहती है, उस पर डटा रहना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को. एंड अविनाश प्लेस पियानो एंड आई फील दैट ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट हिज रूटीन एंड ही practices for like 3-4 hours, and that helps him as well as all of both of us in our music making. So Nice. That's the most important thing. I Wow. I think Vishwajeet is a great lyricist, and that helps us a lot because when a tune comes in our mind, when we compose a tune, immediately it gets converted into song. So I think that's a great aspect of being with him, that whatever thoughts, the rough thoughts what we have immediately get converted into song. So we have a Marathi song, ओल्या सांज वेळी उन्ही सावली सबिल गावी तशी तू, आणि उसमें एक लाइन है कोऱ्या कागदाची कविता अंजशे. That means it is just like a blank paper, and when you write on it, it becomes a song. So Vishwajeet is like that. It's just a blank tune, and when he writes on that piece of paper, it becomes a song. So it's always great to have. That's really nice. Okay, lastly, independent music or film music? Film music, Of course, both the ways, because independent music gives you freedom from many aspects. There are no boundaries. There is only freedom of expression in any manner, and the people can follow it. That is the most advantage of it also.
नहीं, आपका कोई प्लान है इंडिपेंडेंट ऐसे एल्बम का भी आगे फ्यूचर में? एक्चुअली प्लान है नहीं, ये सोचने भी के लिए भी टाइम नहीं रहता क्योंकि वी आर एम्बेडेड इन सो मच ऑफ वर्क, एंगेज्ड इन सो मच ऑफ वर्क, सो पता नहीं जब काम खत्म हो जाएगा या कोई मतलब काम स्टॉप हो जाएगा तो हम हमारा खुद का कुछ कर सकते हैं। ओके, लास्टली किंग दी वेडिंग है का जो गाना है, आई ऑल्सो वुड वांट टू नो अबाउट द सिंगर हु हैज sang दिस सॉन्ग. Yeah, it is sung by Farhad Bhiwandiwala. Okay. And Farhad is a very good choice for this song because this song needs multiple approaches towards singing. Right. उसमें रैप भी है, उसमें वो महाराजा का मतलब गैंगस्टर वाला कैरेक्टर भी है, Right. फिर उसको वो शादी वाला भी गाना लगना चाहिए, तो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस है सिंगर्स से Right. ये गाने के. तो Farhad has done a fabulous job in this. He has written rap portion in this song also. Right. बाकी का song मैंने लिखा था, but तो उसका ये जो मतलब क्वालिटी है वो बहुत हेल्प कर गया है इस गाने में भी. एंड मेरे ख्याल से नॉक नॉक तेरे बाप आया या ऐसे बहुत सारे गाने हैं उसके पॉपुलर हुए हैं रिसेंट टाइम्स में. बहुत सारी फिर बच्चन पांडे या लाइगर ने उसने बहुत गाने गाए भी हैं. And he is upcoming promising singer in the Bollywood also. Yeah. So, तो it was really wonderful working with him. Wow. Okay, one more important question. What are your views on actually advice on the upcoming musicians and singers, you know, जो singer बनना चाहते हैं, music directors बनना चाहते हैं, like what are your what would be your advice कि how because confusion होता है ना कैसे start करें, so like any mantra for them? I think that I will quote it. I will quote it as follow your passion and be honest and work hard. It will come to you. Yeah, that's. हाँ, मतलब बेसिक्स को भूलो मत. जो किसी भी चीज़ का जो बेसिक्स होता है, इमोशन का हो या म्यूज़िक का हो, जो बेसिक्स है वो आपको अच्छे से उसके ऊपर कमांड अगर आप ला सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल रॉक. Wow, nice. Okay, जाने से पहले I don't know, are we allowed, can our audience hear some lines from King the Wedding है? Right now you can't, right? Okay, any favorite Marathi song of yours? Yeah, we can say. Please, Okay. yeah. दोन बार सोड. हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग, असतो सदा मी आता ड्रीमिंग. हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग, असतो सदा मी आता ड्रीमिंग. हो असतो उगाच स्माइलिंग, बघता तुला मन जम्पिंग, वाटे हवे हे गोड फिलिंग. तरररर असतो उगाच स्माइलिंग, बघता तुला मन जम्पिंग, वाटे हवे हे गोड फिलिंग. धुंद धुंद क्षण सारे, हलके हलके फुलणारे, फिरणे ओठांवरती तुझेच गाणे. धुंद धुंद क्षण सारे, हलके हलके फुलणारे, फिरणे ओठांवरती तुझेच गाणे. Wow, that was amazing. I'm sure they'll all love it. Thank you so much. Thank you so much, sir.